Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, jahan par bhi hain aap. Hope you're doing well. Hope you're staying safe and staying healthy. Uh, this will be a short live. यहाँ पर हम बड़ा specifically कुछ details के around ही बात करेंगे. We don't want any kind of controversies. We don't want any news stories, narratives around Sidharth Shukla's death. So this is gonna be some details which have been shared with me. So unke basis pe hi we are just gonna talk a little bit about that. But most importantly, the only thing I would say, sorry, the only thing I would say is, uh, please, guys, it's been less than 72 hours since we lost Sidharth Shukla. The family is still mourning. The mother is still numb. Mother has, she's a very strong woman. She's a very strong lady. But at the same time, we also have to understand she's a mom. So I'm sure a lot of things are going on in her head right now. Uh, she's seen, almost similar things, about 20 years ago, when she lost her husband. Now she's lost her son. So please, let's all be very, very mindful of that. Most importantly, not only for the mother, not only for the family or the two sisters as well. It is also very important that little dignity is maintained around Shanaz Gill as well. Uh, Worse than the mom, she's in a real sad and a real bad state right now. People are actually, friends and family members are really very worried about Shanaz Gill right now more than anyone else, because she has been, in a totally, she's been crying. She's been, crying for the longest time. Also, she is not in a good mental state right now because she was very, very close. uh, अरे यार ये फिर आ गया कोई. All right. All right. Sorry, guys. ये आजकल हमें थोड़े अटैक थोड़े ज़्यादा होने लग गए हैं. So, please bear with me. People in the chat, thank you to the moderator who's already removed him. So, end of the day, the things which have been told, we should definitely maintain some kind of respect for the entire family and friends. उनके friends जो बता रहे हैं, yeah, it is not a good state to even see at Shanaz right now. Even her brother is also requesting people to maintain some kind of sanity. The Sid Hearts or the Sid Naz supporters, just like SSR warriors, they are being, they are really supporting both Siddharth's family and the Shanaz Gill's family. And I would encourage all the SSR warriors also to be, to have the same kind of respect for the family, because it is not easy. It is really, really sad to see. But kuch details which I'm just gonna share. Like I said, uh, uh, I really want to be very mindful that all the information that's shared, let's all make sure that it goes out and about, and people respect and keep their fake narratives and their fake stories, to themselves right now. Jahan tak rahi, the entire story, based on what have been told, and this is the saddest part. Shanaz was actually with Siddharth, that night. They were together when Siddharth came back, and he did not come back in the evening like 7 or 8 o'clock. He came at around 10ish, 9:30ish, 10ish. Us time ke around aake, he did not have any dinner.
But at the same time, he did mention to both Shanaz as well as the family, to the mother, that he was not feeling well, so he's gonna just take some water and sleep. Now he did sleep early, 10:30ish, but he woke up. He did wake up at around 3 o'clock. Shanaz was with Siddharth, and he did mention to Shanaz that he was not feeling well, so he asked her to kind of console and also give water as well. So pani bhi piya, and uske baad he slept, and both of them slept. It was in the morning when she woke up and saw that Siddharth's body was like very stiff, and there was no movement, no heartbeat, nothing. uh, so who is that? Okay, please ignore the trollers, guys, and people who are coming in the chat. So yes, so uske baad, they were the ones, they called the family, everybody was called immediately. uh, I'll also list out a couple of things, couple of questions that I also have in my mind, but I want to hold off those questions. I don't want to kind of start any kind of narratives and all, but there are certain questions now based on what I heard from different sources. uh, the family took Siddharth directly to Cooper Hospital. Now, initially, I thought when I heard about this, death, that the police had come and the police or the ambulance had kind of taken. What I've got to know now, that the family took Siddharth to Cooper Hospital. So that was my first question. Whenever this report comes out and all the postmortem, everything is the report is completed, because right now it is not complete. The evidences, everything that the doctors said, based on the external appearance of Siddharth Shukla, there were no injuries, there were no scars, there was no kind of force that was seen on Siddharth's body. But at this point of time, the reason of death is not conclusive. Viscera sample have been sent. The report is still pending. We are still waiting for the exact cause. At this point of time, yes, the cause has been told to be heart attack, but at this time, from the postmortem perspective, we don't. Exams that you're going to give. Vs platform family talk. What's wrong? Yes, Saviji, that's what has been told. Uh, it is the police actually, and again we'll have to wait for the confirmation, but the police suggests that they were informed a little later after Siddharth was taken to the hospital. So at this point of time, we will have to wait for the final reports from the police as well as the doctors. At this point of time, the news or the update that I have is the family had directly taken Siddharth to Cooper Hospital. So there is no other anybody involved in getting Siddharth's body to, um, you know, wake up. After calling family doctor, the police took to Cooper. Yeah, so police was not. That's what the report says, or this individual said. Police was also informed because it was an actor, but they had already, based on the emergency, they had already taken Siddharth to Cooper Hospital. So we'll have to wait. Like I said, also the viscera samples are also taken, and they're waiting for the conclusion. The only thing the doctors have said, and I'll actually read out what exactly is said. Um, okay. So it says the police revealed that the cause of death has not yet been confirmed, and they're waiting for the final post-mortem report. But according to the doctors, they have not given any opinion. So the word is they have not given any opinion, as they did not find anything conclusive. However, Siddharth Shukra's viscera has been sent for analysis, and the real cause will be
but based on the initial check with the family doctor, it is a case of a heart attack. So again, doctor is the first requirement. Yes, doctor will be definitely ask the question, the family doctor जो वहां पर गए थे in the morning before Siddharth's body was taken to the Cooper hospital. Now, there are many narratives going on around already around Sidharth Shukla, unfortunately, and that is the sad part of our media as well as a different number of channels. I've heard many stories, I've heard many narratives in the last 3 days. Some are saying Sidharth Shukla is also alive. Some are saying Sidharth Shukla, Shanaz might have a hand in this. The family, why was family like, not uh, interested to take Siddharth to Ambani? I mean, there are like multiple versions going on right now. The other point that I brought up yesterday, which is Kumar Shanu's son, who gave an interview. His interpretation also has been running in a different way by many people. उन्होंने सिर्फ ये कहा कि काश प्रोटोकॉल कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उनको ना रोका गया होता and he would have seen. Now the other question that I have, and or I'm sure a lot of people will have, is uh, why was Siddharth's face completely covered? Now, I have my own interpretation of that, and I could be wrong, but I will still share it because I have all the rights to voice it. Uh, just imagine, a boy who uh, was a model, a star, uh, who might have died, who definitely, I'm sure he died because of heart attack, but waiting on the reports, somebody who died, it's quite possible his face might have been discolored or something would have happened, and the mother, who was very very strict, uh, did not want, maybe did not want anybody to see this face, or have a impression in the kind of society, or in the entire world, to keep this photograph or this memory out for anybody. She always has, we always have seen Siddharth Shukla smiling, that wonderful face, the wonderful energy, the aura that Siddharth had. My take on that is, based on what has happened in the last few years, we've seen Sushant ke case mein bhi, how that particular photograph has been fudged, uh, and how those have made rounds in the public domain. So all I feel is maybe the mother did not want that to happen to her son as well. Just imagine, informed and distances from, why not Lavati? Exactly. So Ashish, those are the questions. I saw your number 3. I don't know what your number. Why so much contradictory? Siddharth told his mom that he's not feeling well. Mom gave him juice and water and asked him to sleep. Shanaz said, "Yeah." So I can confirm on the second one. Siddharth and Shanaz were together, and they were on their floor, and they when he woke up, he did mention it to Shanaz Gill. Okay, he's not feeling well. Even when he came, he did show a little uneasiness, but at the same time, at 3 o'clock, it was Shanaz Gill who was made aware. So that one we can. Siddharth's sister and taken to her hospital. Yes, that is also true. So the family took Siddharth to the hospital. I would say, again, I just hope I'm wrong, but uh, he was already declared dead by the doctor, the family doctor who had come. Still, the family wanted to take him to the hospital, and that's what happened. So that's why they took him. Uh,
Okay. Friends were not allowed to see his face with the last transportation, neither a single pic or video of the face. Whole body face. PM is releasing. They want the they whole body or face nor PM. Friends were not allowed to see his face before the last rites as per rituals. Neither a single pic or video of the face nor dead body. Rishi Kapoor, Irfan Khan, etc. The whole body or face nor PM is releasing. They want the histopath hand. Okay. The only contradiction I have, Caroline, here on this one is Rishi Kapoor's dead body. The entire body was, we saw pictures, everything was there in the public domain. Ranbir Kapoor was standing there, and, uh, what's her name? Alia Bhatt was also on a video call with Ridhima Kapoor. So we all saw that. And, uh, at the same time, she's not good. Simran Varyani, she is not good at all. That is the problem. Uh, and that's why I am requesting on behalf of all the SSR warriors, I would say, uh, just because we've seen how things have gone in Sushant Singh Rajput case. We don't want people to start fake narratives and start targeting the family. So at this point of time, it has been a heart attack, a cardiac arrest. Sorry, not a heart attack, a cardiac arrest. Uh, and it is very important that we show solidarity and support to both mother, sisters, as well as Shanaz. Shanaz has really, really, yes, she was living. The sister was living in the same. Shanaji said family ने कहा था that he's a private person, so please don't click the picture. Yep, exactly. Um Also, but Hindu laws, it's strange to keep the face. So that's what I was saying. Why his face was covered, I have my own analogy. I could be wrong, but at the same time, I have, I'll whenever I find it, I will let you know. But uh, I believe mother, a couple of things I'll tell you about the mother as well. There have been some interviews as well. I hope you're not watching, or if you're watching, you're just taking them with a grain of salt. But at the same time, it's very important what mother has said. Uh, she's the closest to Siddharth. Together they were seen on Big Boss as well. Together they were seen on other areas, and she was the one who could bring the calm to the amount of force or the energy that Siddharth had. So he was very, very respectful, about his mom, how she could handle Siddharth in the most toughest of situations, and vice versa. He was the strong pillar of support for his mother, and she was very, 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 particular about her son. She wanted, Siddharth to settle down, get married. And another thing which I got to know was it was around his birthday in December that he was planning to get married as well. So, couple of things that you might have seen even during the rituals. Some of the things that Shanaz was allowed to do was basically because of those. There are some rumors. I haven't validated them, but I'm going to still share this. There are some rumors that they were already engaged. So they were all together engaged. Engaged also for a reason, because they were so close. They were working on multiple things. Uh, but at the same time, Shanaz and dad was a very strict father. She was, even though she was famous, even though she was a celebrity, but still in the end, it was all about, she was very, very, very family oriented, and she had high regards for family. So based on that, this was, I think, one of the conditions. शायद बिग बॉस में भी कुछ ऐसा बोला था उनके फादर जब आए थे, और उन्होंने बाद में भी ये कहा कि you could stay with Siddharth, you could do anything you want, but it has to be legalized. So the reason why they were together was also, the approval also came because
you know he was he gave the permission to Shanaz Gill after getting engaged, and this was a quiet engagement. So we'll find more in the next few days. But they both were treating each other like husband wife because they were trying to get married around December timeframe, December of this year, when Siddharth was about to be 41. So that's the other thing. Now there are many conspiracy theories. There will be many conspiracy theories, guys. Plus, but मेरी सिर्फ एक request रहेगी. Wherever you see anything, wherever you, please, copy forward, all the Sid Hearts as well as Sid Nas, the group, just like you do it for SSR Warriors, because the Sid Nas as well as the Sid Hearts group, they are really backing up Shehnaz right now, supporting her in any way and form, because they know that love, the true love between Siddharth and Shehnaz. They've already, a lot of them are already heartbroken. They're already uh, बहुत बहुत ज्यादा इनका क्लोज रिलेशन था. सो प्लीज, फॉर गॉड सेक, इफ यू सी एनीथिंग, if you cannot stop anyone, please make sure you copy them, and they will be there to support their Sid Hearts and Sidna's group will take care of it. I know, Nipun, you mentioned that, and I did not know. I should be talking to you as well. Sattar sector, I have a like thing in Mohali as well, in sector 71. But yeah, everybody's hearts are heavy, Akshiji. Really very tough time. But listening to all the fake narratives and stories, and all the conspiracies that are building up now, and one more thing which I really feel sad is, uh, अभी सिद्धार्थ को गए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं. uh, Even while the rites were being performed, even while family friends were going to approach his house, जिस तरह से media was jumping on people, I think it is very important that you do these videos, but from a distance. एक तो covid का protocol, उसके ऊपर, the other more important thing is, at least you should have some kind of respect for people. uh, that was really very sad. Very sad to see how the media was jumping on everybody. And then there were some fake people already there, who were fighting, who were arguing, and then there was somebody. I mean, I can go on and on. I've seen so many fake things happening in the last 2 days. uh, that I really feel sad and sorry for how things are done in India right now. This should not happen. सो मेरी तरफ से सिर्फ इतना कि इस केस में अभी वी विल हैव द रिपोर्ट्स वेरी सून. We will have a conclusion around it. People have already started playing on Wikipedia. People have already, because this is all TRP. You have to understand, this is all TRP. This is all about getting the views, the maximum views, the fastest views and likes. I have no clue why this happens. Why don't people have a little patience and wait, for some reports to come? Let the family also, consult. Imagine, सेम थिंग जैसे सुशांत के केस में हमने बात की थी. पीपल jumped on everything. Yes, it was very important, क्योंकि वहां पर फाउल प्ले था. सुशांत के केस में एग्जैक्टली दिख रहा था. सिद्धार्थ के केस में there might be something that might come out, which we don't know. But if you look at what he's been doing, he never had any kind of backlash from anybody in the industry. He had enemies, of course. एक मैं इंटरव्यू देख रहा था जहां पर वो, I think somebody was saying, I'm forgetting his name, but he mentioned कि Siddharth was very upfront. जो मुंह पे है, जो दिमाग में है, वही मुंह पे है, और वैसी तरह वो. देयर इज नो डिले. सीमा जी, पहली बात तो मैं ये कह दूं, देयर इज नो डिले on Siddharth. Please imagine, this is another star who's died, right? So सबसे पहले तो medically, all the reports, everything, if I'm not wrong, and maybe if there is any doctor,
The viscera itself can take about, close to about 15 to 20 days, or maybe more than that. ये हमने सुशांत के केस में भी सुना था. So 15 से 20 दिन तो वैसे ही विसरा रिपोर्ट को लगते हैं. So please do not say about his BMW. No, Robbie Vire, I haven't heard about that windshield, which was broken. At this point of time, no media house, nobody is picking that up, and nobody's talking about it, which is making me a little nervous as well. But as soon as I know, I will definitely talk about it as well. uh, and बहुत enemies, that's why diehard fan. Yes, see, end of the day, he was a hot property for sure. Siddharth Shukla, पुराने दिनों में भी he was really the king of TV. And then eventually he moved on to movies, and even though that movie did not do well, but he was still appreciated, and he made friends all over. और enemies, जो लोग enemies भी थे, उन एनिमीज को भी उसने फ्रेंड्स बनाया था. असीम के साथ क्या लड़ाई नहीं हुई थी बिग बॉस में. देवर लाइक, तू बाहर मिल, तुझे मैं बाहर बताऊंगा. दिस इज हाउ देवर लाइक, तू अभी चल, तू अभी बाहर निकल, अभी हम लड़के अभी खत्म करते हैं. राइट, आई मीन, यू आई एम श्योर यू ऑल रिमेम्बर. तो वहां से ये शुरू हुए थे. एंड प्लीज गाइज, ऑल आई वांट टू से इज, डू नॉट स्टार्ट एनी काइंड ऑफ. आई एम गोना टेक फ्यू पीपल. मैं देख रहा हूँ एक मिसा जी हैं. लेट मी जस्ट टेक हर, मे बी अ फर्स्ट टाइम. हेलो मिसा जी. Hello, good morning, Varun. How are you? Good morning, I'm good. How are you? Great. It's a very shocking news about Sidharth Shukla. Actually, it's very heartbreaking news for all of us. Uh, Sushant, we are already struggling with. It's been long and year fight we are going across, and Siddharth is all of a sudden. That chap also belongs to the same category as Sushant. Very calm, very talented. It's we have no words to express his talent, and it's very subtle person. We have seen in Big Boss how the guy has made him. He was fighting with the whole Big Boss contestants, and how he rise and made everybody as a family. And his mother came in, then Shehnaz, the most bubbly girl, and still he managed to go across. And the guy is so calm. Means if it's like there's one incident I must tell you that he has never made a differentiation about female and a male thing. How he went along with Rashmi Desai. So it's a sudden shock. I mean, since that time, I've been shivering like no words to express. Yep. As far as this thing is concerned, that it's a planned or murder or it's natural, it's no way to digest, because it's like since SSR's case, it's been news that this Gutterwood was already planning some conspiracy to um, murders one more high profile person who is already with lots of heart, with lots of love, all attention, just like SSR. He rise from television, then he made it to a big screen, Yep. and it's he's a very gentle person, and might be this could be the reason. And second thing that is actually hurting is, if it's so normal, if it's just a heart attack, then why uh, pictures are not in news? Why, just like Rishi Kapoor, we have seen Irfan Khan and other people, even Shri Devi, everything is in front of television. Why for this gentleman it was not there? Why such Yeah. a hype? Why is it his full body was tied in a rope and no pics at all, covered with flowers? Yeah. Means we have been watching Shehnaz that she is upset and no other person. Very heartbreaking. It's just like that the people are actually not ready to accept this his Correct. demise, Varun. See, I'll tell you, Message. I mean, couple of things. Yes, I resonate with your sentiments. I really feel a lot of us. I also posted on Twitter. Being a guy, I think this is the second time where even I have felt that kind of feeling. I'm right now getting goosebumps as well, because Sushant made that for the first time.
and now this guy has somehow. And I'm not a fan. I never knew about Siddharth that much. Of course, Big Boss. Unfortunately, I did watch that particular series because of my wife, because my wife was a huge fan of Correct. Sidharth Shukla, and then I Yes. somehow became a kind of a fan of Shanaz Gill, because first she was a Punjabi, second the raw Correct. energy she had. But let me be very clear about one thing, right? I mean, yes, there are some questions, no doubt about it. मैं बिल्कुल नहीं कहता कि यहाँ it's a plain cardiac arrest and everything is very clear. There are questions, but at the same time, what I feel different right now is between Sushant and Siddharth's cases. In Sushant's case, family might have been under pressure because of a lot of other big people, right? Here, a mother who's lost her own son, last only son, and Shanaz Gill, who is like, अगर वो टीवी के सामने लोगों को फाड़ देती थी, तो वो ऑफलाइन तो you can't even imagine what kind of a person she will be if there is any kind of conspiracy, or if there is any kind of thing that has happened. Trust me on that. I don't think she will shy away, or she will worry about her future career, Bollywood, Hollywood, Tollywood. She doesn't even care. She will rip apart the entire Definitely. cabal all by Correct. herself. That's Correct. her this all I'm suggesting right now is to not to stop questioning, not to raise questions. Yes, raise questions, but also show support to Shehnaz, show support to the Correct. family mother. I Yes. was made aware of one thing which I'm really shocked right now. I'm really worried actually. The mother has become very, very numb. She is Correct. not like talking much, and she's No. gone into a totally spiritual kind of mode right now, and she's like talking things which, like, somebody who's lost interest in everything, and like Correct. so she's Correct. saying things like that body ne to hona hi tha, to body to chali gayi, ab Yes. soul hai, and all that All stuff. this we heard from Rahul Mahajan's interview. He said that every day he used to have his dinner at the home round, but this time he did not have his dinner at the home. Then he was not well. So how can means it's nothing to question about. Yeah, But when he reached home, he felt uneasy. His mother was awake. Shahnaz was there. So how they didn't call a doctor, or correct. she was not been so worried that something could mishap. And So yeah, so let me add and he was such a built up correct, guy correct. that they took him themselves. They took him to Cooper Hospital. Means Yeah. anybody. So let me add one more thing here, which I was told, and maybe I did not mention it. So one thing which I'll also tell you is there's again a little difference between Sushant and Siddharth. We have seen Siddharth getting angry, right? He was वो एक Hmm, गुस्से वाला था. ऐसा नहीं correct. था कि वो सुशांत की तरह always शांत या नहीं, नहीं, smiling. Yes, he was correct. smiling. He was a wonderful soul, but at the same time जब गुस्सा आता था, हमने Hmm, एटलीस्ट मैंने तो देखा है, hmm. कैसे उसकी मसल्स पुल होती थी और कैसे Yes, नर्व्स दिखने लग जाती थी, क्योंकि वो बहुत correct. गुस्से वाला था. एंड दैट्स वेयर द मदर आल्सो मेंशन्ड कपल ऑफ टाइम्स, कुछ इंटरव्यूज भी हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि शी knows how to kind of bring him to a normal level. Now, Okay, what I've heard yesterday, or this night that happened, they did suggest to Siddharth that we should take correct. to the hospital, or even Shehnaz. Actually, let me be very clear about what I heard. I'm not going to Correct. change the words. What I Correct. was Correct. told was Shehnaz actually requested Siddharth at 3 o'clock, let's go to the doctor, let's see, and hope this is not something risky or dangerous. But Siddharth, being Siddharth, he did not agree. He Correct. said, you know what, I am all good. Correct. Let me just I'm good. take this water and I'm gonna sleep. Hopefully everything. And we all know, right? I mean, आप Correct. खुद भी सोचो, घर पे कभी होता है, if you're feeling a little uneasy, या होता है headache होता है, या vomiting feel हो रहा है, या nausea हो रहा है, you just say कि दवाई खाते हो, नमक खाता हूँ, चलो थोड़ी देर सोते हैं, we'll see. Correct. This is a normal human, वो कहते हैं ना, टेंडेंसी, Yes. और हर Yes. घर Yes. में यही होता है. So वी शुड नॉट Exactly. सस्पेक्ट कि भाई क्यों नहीं लेके गए फैमिली, क्यों डॉक्टर के पास नहीं, क्यों इमरजेंसी नहीं. अरे एंड ऑफ द डे, फॉर फैमिली ही इज नॉट द सुपरस्टार, राइट? कि उसके आसपास Yes. कोई, ही इज अ रेगुलर बॉय. सिर दुख रहा है या नोजिया फील हो रहा है, कई बार ऐसा होता है, एंड अगेन आई एम नॉट
continuously pacifying things, but we also have to correct. understand one more thing. As a 40-year-old man, right? You come from outside. कई बार ऐसी चीजें होती हैं, you drink with your friends or you have a good time with your friend and you have like a hangover kind of thing. तो कई बार वो होता है कि खुद ही बच्चा नहीं बताना चाहता यार कि मैं अपने मम्मी या वाइफ को क्या बताऊं, let me just quietly just have a medicine and I'll sleep, everything will be. So Yes, कुछ भी हो accepted. सकता है, Correct, right? correct. But then one more thing again, that why things were not in media, means why um, means whole body was wrapped in a white हाँ, cloth till वो the वो face is वो covered. डेफिनेटली एक समथिंग, The- उसका भी or मेरी अपनी, हाँ प्लीज बोले। or I think it could be the reason that they actually wanted to make it an issue. It might be a natural demise, but they just wanted to make it a hype, and we all people are sitting and talking just for a giving some time to him, talking about Siddharth rather than going across with Shushant. Might be things might be natural, but they wanted अरे to मुझे make it a नहीं नहीं, hype. I didn't get it, I didn't get your But it's point. like that they intentionally did so. There was nothing wrong otherwise. It might be a natural demise, but Yeah. just to give it a bit of mystery part, they wrapped him No, 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 till no, the please, face. नहीं 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 No नहीं would have नहीं। means why they means we have we means it's like some people are we somewhere in the hearts have likewise in Shushant that he might not be Shushant in the ambulance. He might they would have taken him somewhere else. Means I that I series means करेक्ट करेक्ट, नहीं देखें we ये are साफ very सी बात है, आपका सिर्फ नहीं है, बहुत लोगों का दिमाग ऐसे चलेगा। correct. And I'm not saying you're wrong. All I'm saying is, at this point of time, जिस तरह से बॉडी गई है, वो मेरा क्वेश्चन मेरा भी है। एंड ऑफ द डे, मैं थैंकफुली कहूंगा, भगवान का इतना शुक्र है, मैंने इतनी डेथ्स ऐसी नहीं देखी हैं, बट जब भी मैंने देखी हैं, जहां भी मैंने विटनेस किया है, एंड स्पेशली द हिंदू कल्चर, राइट, उसके अंदर यू वांट टू शो द फेस लास्ट टाइम, because you want to bid goodbye or say goodbye to Correct. them, and you want to have that kind of memory, but at the same time, I hope you also realize एक और चीज, सुशांत के केस में उसकी फोटोग्राफ के साथ जिस तरह की जो भी चीजें चल रही Correct. हैं, Correct. you know that really was very very sad to see Sushant ke sath. And now I somehow feel maybe the mother or the family thought कि अगर हमने ऐसा कुछ किया, तो this would become another kind of sensation for people and public. Yes. Let's just keep it very normal, very humble, because see, end of the day, I think even the Brahma Kumaris were there, and Brahma Kumari के शायद हो सकते हैं कुछ और रिचुअल्स हों जो मुझे अभी नहीं पता, और मैं चाहूंगा मैं Okay. पढूं भी, और मैं चाहूंगा कि हो सकता है उनके अंदर कुछ और हो रिचुअल्स, बट एज अ ट्रेडिशनल हिंदू रिचुअल्स, हमें तो यही दिखा है कि शक्ल दिखनी चाहिए थी। नाउ अभी एक 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 स्टेटमेंट आ रही है, रत्नाकर श्रीयन जी कह रहे हैं, हिज जिम instructor had given a statement that his doctor had advised to take rest and do less workout. तो यही Okay. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब इसको भी मैं आई डोंट वैलिडेट दिस, बट एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट पॉसिबल। हमने खुद देखा है, इस टाइम पे ही वाज एट द पीक ऑफ हिज करियर, और करियर को अंदर शाइन करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, टू हैव द पीक परफॉर्मेंस, हैव द बेस्ट ऑफ लुक्स एंड एवरीथिंग। लोग बाल उगाते हैं, अमिताभ Correct. बच्चन इज एन आइडियल एग्जांपल कि ही इज बॉल्ड, बट he is completely different person when he's outside his home। अपने घर Mm, में वो वो टोपी पहन के correct. इसीलिए रखते हैं because he doesn't want to wear the wig all the time। Correct. But for people like us, and I'm sure God give him a long life, I don't wish ill on anybody, even though I'm not a fan and I don't appreciate what he's been doing around Sushant, but still मैं कहना नहीं चाहता, but मैं सिर्फ ये कि भगवान ना करे कभी अमिताभ बच्चन का ऐसा होता है, Mm, he will be either covered completely, yeah, he will come with that wig only, because ये public में एक image होती है इन artists की, इन stars correct. की। So सिद्धार्थ के केस में अगेन आई रियली डोंट वांट टू, एज मच एज आई वुड लाइक टू, मुझे पता है लोग इसको मिक्स करेंगे ही करेंगे सुशांत के केस Correct. के साथ, बिकॉज सुशांत के केस ने 1.5 साल से हमें हमारे दिमाग पे इतना छाया हुआ है कि अब ना चाह के भी
अब तो ये भी होगा कि अब रेगुलर कोई कॉमन मैन की भी होगी तो उसमें भी हम तो लोग अब शक we करेंगे we कि will यहाँ relate, पर we भी will कैसे relate. मर गया कोई। So Correct, that is true, that is human nature right now, but all I'm trying to say is कि हर चीज को एक के हिसाब से के एक एक रेगुलर फैमिली को एक रेगुलर अपने वो 14 दिन 13वीं उनको करने दें, correct. उसके बाद उनके जो भी रिचुअल्स हैं वो करने Mm, दें। आई एम वेरी वेरी श्योर, मैं मदर को तो इतना नहीं समझ सका, क्योंकि मदर इस टाइम पे बहुत क्वाइट है, बट मुझे correct. शहनाज के ऊपर है कि Yes, शी विल डेफिनेटली रिप अपार्ट। correct. तो कह रहे हैं ना कि उसके ऊपर भी प्रेशर हो सकता है, उसके ऊपर भी चीजें हो सकती है, ट्रस्ट मी गाइस, Correct. Yes, सबके ऊपर प्रेशर हो सकता है, शहनाज गिल के ऊपर नहीं होगा। अगर उसको सलमान खान जैसे nice. को, जिस तरह उसने बिग बॉस में भी पटक के Correct. करा था सब कुछ, Yes, तो ये किसी से नहीं लड़ेगी, ये yes, लड़की, ये अपने और जिस तरह से उसकी हालत थी, मैं अ, अ, yes. Yes, मैंने वो he is. सारी चीजें देखी थी, फोटोग्राफ्स कंपेयर कर रहे थे रिया चक्रवर्ती के साथ। पहले तो बहुत ही शर्मनाक चीज है उसके साथ शेयर करना, क्योंकि वो Correct. तो किलर है, रिया तो Correct. किलर है, उसके साथ शहनाज No का comparisons. और इनका रिलेशन कंपेयर ही नहीं हो सकता। No, no, बट no. एट द सेम टाइम लुकिंग एट हर स्टेट, जिस तरह से वो वहां पर, इवन जब यू नो क्या बोलूं मैं, जब इट वाज ऑल बर्निंग राइट एट दैट मोमेंट, उस टाइम पे Yes. भी शी वाज सिटिंग राइट बिसाइड द फायर। Correct. इतना गट्स नहीं होते किसी में, अच्छे अच्छे लोगों की हालत खस्ता होती है, बट शी Correct. वाज लाइक लिटरली इन अ बैड शेप। तो उनके रिलेशन को, उनके प्यार को प्लीज लोग बदनाम ना करें, ना is करें. all my request, and she will really really वो शेरनी डेफिनेटली सबको फाड़ के जस्टिस Definitely. देगी अगर कुछ गड़बड़ हुआ, दैट इज फॉर Correct. श्योर। It's just like that. We have faith in God, and everything. If family is saying things are fine, so let's give them their things. So I just pray to God things go fine with everybody now. No Yeah, more bad news to be in the coming days of the years. Thanks, right. Varun. Thanks for being थैंक with यू us. सो मच, थैंक यू सो मच। Thank ऑलराइट, खंबागणी अबे भाई, कैसे हैं आप? खम्मा गणी मैं ठीक हूँ। और मुझे ये कहना था कि भाई अबे ये सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में जो मीडिया ने कवरेज की, उसको देखकर मुझे मतलब शर्म आती है। इन्होंने पूरे उसको तमाशा बना करके रख दिया। वहां यप, पर जो सेलिब्रिटी आए, उसके परिवार से मिलने आए, उसके साथ वो फोटो खिंचवाने के लिए बोल रहे थे आधे उनको। अरे यप, भाई मैं अरे भाई तुम ये जो जगह तो देखो, सिचुएशन तो देखो। वो कोई पार्टी वार्टी में नहीं आए जो तुम उनको बोल रहे हो कि फोटो खिंचवाओ। बहुत सारे लोग तो इतने बेशरम है कि वो आए ना, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और आधे पापराजी वाले अगर कोई मान लो कोई नॉर्मल गाड़ी में आए तो बोल रहा है ये गरीब है, ऐसे न जाने हजार चीजें बोली गई। और जो लोग भी जो जो लोग भी शहनाज और रिया को कंपेयर कर रहे हैं, पहले आप देख लो किस चीज को आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हो। वहां एग्जैक्टली, पर मैंने देखा था ना उसको, शहनाज को, तो एक तरह से मेरे भी ऐसे हो गए थे, जैसे आंसू आने जैसी स्थिति हो गई थी। यप, उसको उसके साथ वो लड़का था, वो उसको आगे लेके जा रहा था। अगर 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 वो नहीं होता ना तो वो उठती भी नहीं वहां से। राइट राइट राइट। पर लोगों को शर्म आनी चाहिए। इंडियन मीडिया इसलिए तो बदनाम है क्योंकि ये संवेदनहीनता है इन लोगों में। ये पापराजी में, फोटोग्राफर में, ये देखते भी नहीं है कि भाई क्या चीज है, किस सिचुएशन क्या है, हमको क्या करना चाहिए। इनको बस शहनाज 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 कर करके सारे सारे चिल्ला रहे थे। या, क्यों? अगर फोटो फोटो अगर तुम लोगों को खींचना है तो और आगे कभी खींचना। अभी इस समय तो सबको बख्श दो तुम। और राइट, मानना पड़ेगा वो सिद्धार्थ की माँ को कि भाई वो बहुत स्ट्रांग लेडी है। और वो जो भी आ रहा था उनको वो नमस्ते कर रही थी। भले वो अंदर से भले कि वो कितने रो रही हो, पर वो सब बाहर से सबको नमस्ते वो जरूर कर रही थी। ये चीज मुझे उनकी अच्छी लगी। करेक्ट, मुझे ये चीज बोलनी थी कि भाई आजकल के मीडिया में संवेदनहीनता आ गई है। इन लोगों में इमोशन बचे ही नहीं है।
हर जगह इनको टीआरपी दिखती है, हर जगह टीआरपी, हर जगह इनको मसाला चाहिए होता है, चाहे किसी की डेथ हुई हो या कुछ भी हुआ हो, इन लोगों को मसाला ही दिखता है हर जगह। जैसे ही वो ये सारे न्यूज चैनल वाले कैमरा गड़ा के वो कार में पूछ रहे थे, शहनाज शहनाज शहनाज। अरे उस समय अगर आप जाएंगे ना, तो बहुत सारे लोगों ने इनको मतलब लताड़ लगाई है, ये मीडिया वालों को, बहुत सारे लोगों ने, कि भाई कुछ तो शर्म करो, राइट। देख तो लो सिचुएशन क्या है। ये करेक्ट। लोग देखते भी नहीं है और ऐसे पहुंच जाते हैं। या। और जिस तरह से मैं तो कहूंगा कि भाई भगवान शहनाज को शक्ति दे कि वो इस सिचुएशन से गुजर सके, उन और सिद्धार्थ के परिवार को शक्ति दे भगवान। और उस समय जो वो होश वो संभल भी नहीं पा रही थी, अगर आप देखें तो शहनाज और जवाज, वहां पर रिया चक्रवर्ती इधर उधर घूम रही थी। अगर आप सुशांत के वहां पर देखे ना, तो वो इधर उधर घूम रही थी और शहनाज तो संभल भी नहीं पा रही थी, अगर देखें तो। अरे मुझे रिया को तो वैसे भी अलाउड नहीं था वहाँ क्रेमेटोरियम में जाने के लिए, बट इवन जब वो गई थी मॉर्चरी में, लास्ट जो भी करने गई थी, चाहे वो उसके जो उसके हिसाब से तो बकवास पैर छूने गई थी, सॉरी बाबू करने गई थी, बट जो मेरे को लगता है वो तो ऑब्वियसली उसका या तो थंबप्रिंट या आई वो लेने गई थी फॉर सम काइंड ऑफ डिवाइस, जो मुझे लगता है, बट आई कुड बी रॉन्ग। दोनों का कंपैरिजन तो मतलब जमीन और आसमान को एक बराबर देखने वाली बात है, बहुत ही। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो मीडिया का हाल था मैं कल देख रहा था, हालांकि इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने सुशांत के केस में देखा है कि मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। The videos that they've clicked and they've created, the pictures that they've shared, I think उन्हीं की वजह से हम शायद सुशांत के केस में कुछ कर पाए, पर यहाँ पर you know this was pictures at the wrong time, this was video at the wrong time, जब उसको लास्ट अपनी जर्नी के लिए लेके जा रहे हैं, एंड इवन मैं वो देख रहा था कैसे उस एम्बुलेंस को फॉलो किया जा रहा था फ्रॉम द हॉस्पिटल टिल द क्रेमेटोरियम, ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं कोई रेस चल रही है। आई मीन यू आर काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग, मुझे थोड़ा ऐसा लगा, इट वाज रियली को फेस दिखाते। श्यामला जी, यही मैं बात कर रहा था, हमने पहले भी बात की थी, आई डोंट नो इफ यू जस्ट जॉइंड। देयर आर डेफिनेटली क्वेश्चंस अराउंड दैट कि क्यों किया, इज इट बिकॉज ऑफ ब्रह्म कुमारीज, कि उनके रिचुअल ऐसे होते हैं, क्योंकि उनकी ब्रह्म कुमारी की एक बहुत सीनियर की डेथ हुई थी आज से कुछ साल पहले। नरेंद्र मोदी जी ने भी उसके बारे में किया था ट्वीट एंड बात की थी, बट उस टाइम पे मैं देख रहा था उनका फेस दिखाया गया था, तो पहले मैं वही सोचा था शायद ब्रह्म कुमारी इसके कुछ होंगे। हो सकता है द फैमिली और द मदर स्पेसिफिकली डिड नॉट वांट द फैंस, द पीपल टू रिमेम्बर सिद्धार्थ इन दैट काइंड ऑफ द फाइनल फेस। हो सकता है कार्डियक अरेस्ट की वजह से दे कुड बी some kind of jaw या face या some kind of alignment. All I'm saying is these are all my assumptions, but at the same time इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ और भी हो, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बट इस टाइम पे हम सीधा इस पे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि बॉलीवुड इज रिस्पॉन्सिबल, उसने मार दिया ना। कल की सेशन में तो लोग नाम भी लेने फिर शुरू हो गए, कि सलमान खान, ये खान, वो खान। अरे यार, होल्ड ऑफ, यू कैन नॉट जस्ट जंप ऑन डिसीजंस बिकॉज सुशांत के केस में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, डजंट मीन कि अब वो सारों में इन्वॉल्व हो जाएंगे या सब में है। और at the same time I would say it's not that it is a very clean kind of death right now, it is हो सकता है simple cardiac arrest का एक ये केस हो। but please guys, please my only request, please do not start this conspiracy theory, because end of the day uh, it is not good, it is really disrespecting the dead. At least let's wait for 13 days,
13वीं होने दें, हिंदू रिचुअल्स उनको फॉलो करने दें, and उसके बाद, yes, we all have questions, we should ask those questions. I am sure the family will answer those questions. If not, the agencies will answer the question. But इस टाइम पे ये सारी बातें करना is like disrespecting. एंड एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, ये मैंने बहुत सारे अब केसेस में देख लिया, स्पेसिफिकली इन मुंबई, हो सकता है बाकी सिटीज में भी हो। जितने भी लोगों को मैं क्रेमेटोरियम में लेते हुए जाते हुए देख रहा हूँ, उन सब केसेस में द बॉडी इज ऑलवेज टाइड विद अ रोप। सुशांत के केस में इसकी भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलाई गई थी कि उसको रस्सी से क्यों बांधा गया, ऐसे क्यों लेके गया। I have seen it now in many cases that the rope is used to tie the body so that the body doesn't move. अब चाहे वो सिद्धार्थ के केस में हो, सुशांत के केस में हो, इवन ऋषि कपूर के केस में मैंने देखा था, सबके केसेस में ये बांधा जाता है। तो ये बार बार इस चीज को कहना कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, क्यों उसकी बॉडी को रस्सी से बांधा हुआ था, हिंदूज ऐसे नहीं करते। गाइज, ऐसा नहीं है, और बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। सो प्लीज, स्टोरीज, कॉन्स्पिरेसीज, नरेटिव्स बनाने बहुत आसान है। यहाँ पर उनसे हमें इन चीजों को साइड करना है। लेट्स नॉट स्टार्ट मिक्सिंग Siddharth with Sushant. Yes, there are a lot of commonalities, no doubt about it. Both were smart, intelligent, had a very humble beginning. They made it to the top, I would say. दोनों टीवी में इतने बड़े नाम थे, मूवी इंडस्ट्री में भी आ चुके थे। It was really sad to see, what happened to Siddharth. But स्टिल आई वुड से 1%, मैं 1% बोल रहा हूँ अभी, हालांकि मैं ज्यादा खुद पर्सनली ज्यादा बिलीव करता हूँ, बट ओनली 1%, प्लीज गिव इट बेनिफिट ऑफ डाउट कि yes, it was a cardiac arrest and that's how he died. You all know he was a well built guy, बहुत एक्सरसाइज करता था, बहुत सारी और चीजें भी होती होंगी टू कीप हिमसेल्फ फिट। डाइट का बहुत ज्यादा पक्का था। शेखर सुमन ने भी ट्वीट किया था कि they had the same trainer, and both of them, like trainer and Shekhar Suman, used to talk about his fitness regime, कि कितना particular है अपने fitness regime के लिए. So if somebody is so particular, was so particular about his fitness regime, please try and understand, the body also responds, reacts. Yes, too young to go, for sure. Very shocking, very heartbreaking. But please, give more support to Shanaz Gill, give more support to the family. Truth will come out. Truth cannot hide. It will come out. अगर कुछ गड़बड़ होगी, कुछ भी होगा. But if we start this conspiracy theory, so, कि सिद्धार्थ भी जिंदा है, सिद्धार्थ का ये जानबूझ के कोई और बॉडी थी इसलिए उनको कवर करके लेके गया, शहनाज को सारे सीक्रेट पता है, वो तो उनके साथ थी लास्ट मिनट पे, फैमिली को भी पता था, फैमिली ने क्यों फ्रेंड्स को मिलने नहीं दिया, ये सब कॉन्स्पिरेसीज हैं। प्लीज 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 हेल्प मी स्क्वैश देम, और क्वैश देम योरसेल्फ, और कीप अवे फ्रॉम ऑल दिस। दिस इज रियली अ फैमिली डिसीजन कि फेस क्यों कवर किया गया। द फैमिली कैन ओनली कम एंड टेल अस अबाउट दैट। और कुछ कहना चाहेंगे अबे भाई? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सेलिब्रिटी होते हैं और जो कॉमन मैन होते हैं उनके लाइफ में बहुत मतलब बहुत सारे डिफरेंस होता है। जैसे कि कॉमन मैन काम करता है लगभग ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 घंटे, और सेलिब्रिटी काम करते हैं कम से कम 13 से 14 घंटे, या कभी कभी उनको 20 घंटे भी काम करते हुए लग जाते हैं। तो जो वो बोल रहे हैं ना कि भाई ये यंग था, तो सेलिब्रिटी एक्सरसाइज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक तो फिट रह सके और एक तरह से यंग दिख सके। क्यों? Yeah. क्योंकि इसमें 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 आपका यंग हो, इस इंडस्ट्री में आपका फिट होना और यंग होना बहुत जरूरी है। Yeah. इसलिए इसलिए सेलिब्रिटी वो जो बॉडी बनाते हैं ना, मसल बनाने वाली, कभी कभी ये दवाइयां भी लेते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ये जिम में जाते हैं, तो ये मान लो इन्होंने 5 घंटे एक्सरसाइज की, तो ये
1 या 2 घंटे के ब्रेक के बाद एक दवाई जरूर लेंगे, जिससे क्या होगा कि भाई इनकी जो थकान है वो उतरेगी और अंदर के मसल जो है वो फूल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी बॉडी मस्कुलर दिखती है, एकदम हैंडसम टाइप। और ऐसे ऐसे ही करते हैं ये, कम से कम जैसे कि अगर अभी हम देखें तो जो बूढ़े बूढ़े जो हैं 50-55 साल के, वो मतलब वो ऐसे क्यों दिखते हैं एकदम नॉर्मल। अगर नॉर्मल आप बूढ़े आदमी को देखें तो वो एकदम बूढ़े जैसे दिखेगा, और ये बॉलीवुड वाले 50-55 साल के ऐसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये एक दवाइयां खाते हैं और एक ये जिमिंग करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि भाई इनकी जो एनर्जी है वो काम करती रहती है, जिससे क्या होता है कि जो बुढ़ापा होता है ना वो इनके चेहरे पर दिखता नहीं है, और ये मेकअप करते हैं जिससे ये अपनी कम मतलब अपनी उम्र से काफी ज्यादा कम एज के नजर आते हैं। तो एक ये सीक्रेट है कि भाई वो उसको हार्ट अटैक आने का जो है ना, कई बार डॉक्टर लोग मना करते हैं कि भाई आप कोई भी कैप्सूल या दवाई होती है ना, उसके साथ वो स्पेसिफिक एक या दो चीजें खाने को मना करते हैं कि भाई आप इनके साथ ये चीज मत खाइएगा, इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो जैसा कि कहा था कि भाई उसने मेडिसिन खाई थी एक, तो उस मेडिसिन के बाद अगर उसने कुछ खाया हो तो अभी वो रिपोर्ट आएगी, उसमें उसमें क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है पेट में शरीर में जा करके एक्शन का उल्टा अपोजिट रिएक्शन हो जाता है, जो जिससे क्या होता है तबीयत खराब हो जाती है या उल्टी आ जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कॉमन लाइफ में होती हैं। या नहीं, देखो, दवाई ली कि नहीं ली, कौन सी दवाई ली, ये तो ऑब्वियसली बाद में पता चलेगा। बट एट द सेम टाइम ऑल आई कैन से इज, अभी रिसेंटली किसी एक और मैं उनका नाम भूल गया हूँ, ही इज अ वेरी सीनियर गाय, विलन होते थे, अभी भी विलन के रोल में आते हैं। एंड ही अभी इंटरव्यू दिया था, कुछ महीनों के पहले की बात है, कि मैं 70 साल का हो गया हूँ बट फिर भी मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है इतने घंटे दिन में, सो दैट आई कैन गेट सम रोल एंड सम वर्क इन द इंडस्ट्री। सो दिस इज हाउ पीपल। और अगर आप सिंपल एक गूगल सर्च भी करें, आपको वहां पर भी दिख जाएगा कैसे अबव 40 को बॉलीवुड में मटेरियल है, और 40 पे आके सबका एक वो शुरू हो जाता है कि नाउ देयर इज अ डाउन ट्रेंड, ये लोगों को काम मिलना या वो सब चीजें कम हो चुकी है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें, ये जितने भी अंकल्स हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये फिजिकली फिट सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने से हैं, देन मिस्टेकन। चाहे शाहरुख को देख लें, जिन्होंने आई थिंक ही वाज अबव 45 व्हेन ही स्टार्टेड बिल्डिंग हिज सिक्स पैक एब्स। सलमान तो चलो प्लास्टिक की दुकान दिखते ही हैं अब। उसके अलावा आप देख लें लोगों को, और यहाँ यूएस में एक एक बहुत बड़ी वो इंजेक्शन लगाते हैं अपने फेस के लिए, हाईलाइट करने के लिए या रिकवर करने के लिए या अपलिफ्ट करने के लिए। ऑल दैट स्टफ हैपेंस, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन अराउंड दैट। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर सिद्धार्थ के केस में ऐसी अभी कोई भी चीज के बारे में जरूर बात नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, जो हमने बिग बॉस में भी देखा। बाकी लोग जबकि बैठ के टाइम पास करते थे, चीजें करते थे, हमने बिग बॉस में जितना देखा, सिद्धार्थ यूज्ड टू बी अराउंड द जिम। वो बहुत सारी चीजें खुद करते थे, अपने लिए करते थे, एंड और दूसरों को भी मोटिवेट करते थे कि यू शुड डू अ लॉट ऑफ दीज एक्सरसाइजेस, दिस इज हाउ यू शुड डू इट। मैंने जैसे बताया, शेखर सुमन ने पहला या दूसरा ट्वीट यही किया था कि द ट्रेनर, क्योंकि उनका ट्रेनर कॉमन था, तो उन्होंने भी यही बात की कि उसका फिटनेस रिजीम जो है इज रियली अप्रिशिएटिव, ऐसा इतना कमिटमेंट से वो करता है। तो हर कोई, यस स्टीरॉइड्स हैं, बोटॉक्स है, बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो बहुत लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ऑब्वियसली उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते होंगे और होते हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट फॉर सिद्धार्थ, व्हाट आई एम सेइंग इज सिद्धार्थ के लिए तो सिर्फ इतना, अभी गिन के 70-72 घंटे भी नहीं हुए यार, थोड़ा सा उसकी फैमिली और उसको रिस्पेक्ट दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ही
really deserves a lot of love and support more than him now. His mother, who I'm sure is in a different state of mind, उनको भी support चाहिए. And then Shenaz, I hope and I pray कि कुछ गलत ना हो, and she is it doesn't get sick or something, क्योंकि कल जो उनकी हालत थी देख के बहुत बुरा लगा. And अभी भी जो मुझे पता लगा है कि she is still in a state of shock. She is really not ready to even accept कि Siddharth nahi hai ab. And that is what I really wanted to do in this session, and that's why I wanted to keep a short one, because uh, I really don't want to make a mockery of somebody's death. We respect Sushant a lot. We've learned a lot from Sushant. Same thing अब मैं expect करूंगा कि सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी let's all show some kind of sense. Do not create hysteria. ये हुआ होगा वो हुआ होगा, but yes, do not stop asking questions around Cooper Hospital. ये Cooper का issue क्या है? Couple of questions that came up was कि body को क्यों रखा गया overnight. Uh, guys, please try and understand, ये अब पुराने जमाने की बातें नहीं रही. If somebody was brought to the hospital at around say 11 o'clock, and then they tried to kind of see if he was alive or not. Afternoon तक सब कुछ अगर उन्होंने किया, उसके बाद अगर उन्होंने postmortem किया, and if it was late, postmortem के बाद the body को obviously घर पे लेके जाने के लिए I don't think there would be a permission. Yeah, I'll definitely get someone to even confirm what is the process. But इसलिए रखा गया था वहां पर शायद क्योंकि the body was obviously dissected, and there was definitely everything was done. They could have, but I'm sure there was some solid reasons behind it जो हमें पता चल जाएंगे, तो इसलिए रखा गया था. And next day obviously please let's not start any conspiracies के हर चीज के ऊपर एक conspiracy हमें देखनी है. I think one of the reasons that has happened is सुशांत के केस में रह के इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, इतना ज्यादा हर कोई अब करने लग गया है कि अब हर चीज में उनको कॉन्स्पिरेसी दिखती है, हर चीज में उसको एक नया नैरेटिव बनाने की शुरू हो जाती है. Nowadays body is kept in cold. Okay, thank you for confirming. Nowadays body is kept in cold after that sometimes. uh, so please, blood pressure diamond will have side effects, guys. There for Sidnas fans, that is the most important thing to do. I'm sure they will help us for justice for also when time comes. Absolutely, and that's why my humble request सबसे मैं कहूँगा, and we will continue to support the Shehnaz Gill as well, as much as we'll support the family. But please, let's all make a commitment to all the departed souls that we will show them the respect that they deserve. Let the family live with humility. Have them mourn, पर देयर, वो कहते हैं ना, जो भी वो स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं उनके उनके हिसाब से उनको मोर्न करने दे. उसके बाद आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी श्योर, जैसे कि मैंने कहा, बी इट मॉम और बी इट शनाज, they will not leave anybody. They will rip apart the entire world because they've lost everything that they had. So उन लोगों के लिए कोई और ऊपर आगे पीछे कुछ नहीं है. So they will not keep quiet. So if they are saying it is a cardiac arrest, प्लीज ट्रस्ट देम. हर किसी के ऊपर एक वो शक की उंगली रखना जरूरी नहीं है. प्लीज, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एंड प्लीज शो लॉट ऑफ लव. Okay, I see Shalini join as well before I end. Hello, Shalini. You are mute. हाय. Oh, you are mute. हेलो. हाय वरुण. Hi. हाय. मैं सुन रही थी सारी बातें एंड आई वाज रीडिंग अ फ्यू कमेंट्स आल्सो. आपने बिल्कुल सही बोला है, जो भी बोला है आपने, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई डेथ हो जाती है तो हमें, हमारे अंदर इतनी वैल्यूज़ और इतनी संस्कार तो होने चाहिए कि हम उस डेथ को रिस्पेक्ट कर सकें. मैंने बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे लोगों को सिद्धार्थ को ट्रोल करते हुए भी पढ़ा है. इट जस्ट इट्स वेरी appalled me to see कि इस तरह के भी लोग हैं जो किसी के मरने के बाद भी उसे अटैक कर रहे हैं पर्सनली. इट्स वेरी वेरी सैड. बट मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ और बार बार यही बोल रही हूँ कि
हम यूज्ड टू हो गए हैं, बिकॉज़ हम एक लड़ाई जो लड़ रहे हैं दिशा के लिए, सुशांत के लिए, जिया के लिए, तो शायद हमारा पर्सपेक्टिव जो है ना वो बड़ा नैरो हो गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, स्पेशली एसएसआर वॉरियर्स से, कि आई एम वेरी श्योर कि हम सब समझदार लोग हैं और हमारे अंदर इतनी सैनिटी ज़रूर है कि हम फ़र्क कर सकें, और हम इतने इंटेलिजेंट भी हैं कि हम जान सकें कि कहाँ पर शोर मचाना है और कहाँ नहीं। लेट्स नॉट स्टार्ट जंपिंग इन ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डेथ। अगर हम हर चीज़ को एक ही तरीके से देखेंगे और हर चीज़ पे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी वहीं पे ज़ीरो हो जाती है। सो हैव दैट सेंसिबिलिटी ऑल्सो, गिव इट सम टाइम। हमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों केसेस में जो याद रखना चाहिए, कि सुशांत के केस में उसकी फैमिली वहाँ नहीं थी। उसके आस-पास कौन से लोग थे हम जानते हैं। इस केस में सिद्धार्थ के केस में उसकी फैमिली शुरू से उसके साथ थी। उन्होंने सारे डिसीजंस लिए हैं। पुलिस को बुलाना पड़ा था उन्हें। उन्होंने अपने फर्स्ट गो में पुलिस इमीडिएटली नहीं आ गई थी। पुलिस ने आके सारा कंट्रोल नहीं लिया था। देयर वाज़ नॉट अ थर्ड पार्टी संदीप हु वाज़ रनिंग द शो। उसकी मदर, उसकी सिस्टर्स और शहनाज, शहनाज तो बेचारी, उसको तो होश नहीं था, लेकिन उसकी मदर और उसकी सिस्टर, उसका जीजा, इन लोगों ने सब कुछ किया है जो किया है। सो हैव सम फेथ when they have kind of closed it in their hearts, or you know, they've closed the whole thing as a natural death. We must respect that. And like Varun said, अगर कुछ foul play है तो शहनाज छोड़ेगी नहीं किसी को। तो इतना फेथ हमें रखना पड़ेगा और हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग अगेन दोज जजमेंट्स एंड अगेन दोज काइंड ऑफ एक्यूजेशंस। और एक और चीज़ ये है कि सीक्वेंस वाइज हमें अलग अलग न्यूज़ मिल रही है अभी, कि गोली खाई थी, नहीं खाई थी, जूस पिया था, पानी पिया था, आइसक्रीम खाई थी, ये सारी बातें जो है, लेट्स वेट, लेट देम गिव अ स्टेटमेंट टू द मीडिया, बिकॉज इतना भरोसा फैमिली पे तो रखो ना, फैमिली तो हमेशा साथ ही थी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे 40 ईयर ओल्ड्स को हार्ट अटैक से जाते हुए देखा है। तो अगर आप ये पॉसिबिलिटी सोचना चाहते हो कि आप फाउल प्ले है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी सोचो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कीप योर सैनिटी, कीप थोड़ा सा ना लॉजिकल होके भी सोचो। तो दूसरी रियलिटी भी है कि 40s के एज में बहुत सारे ऐसे यंग लोग चले जाते हैं। और एक बात जो उसकी मदर ने तो नहीं कही, लेकिन उसकी फैमिली में से निकल के आई है, वो ये कि हिज फादर आल्सो डाइड एट अ यंग एज, अगेन फ्रॉम सेम हार्ट अटैक। तो No, no, जेनेटिक no, भी no. हो सकता है। No, 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 no. Did not die because of heart attack. Let me be very clear. He हम्म, had a liver disease, जिसकी वजह से his father died. And yeah, so not okay, for heart. then I stand corrected. Okay, then I Yeah, stand corrected, because what yeah, I heard was that he also died at a young age from heart attack. So correct. maybe that you're right. Maybe you've done your investigation. So Yes, yes, what I'm yes. saying is, still I would still say that no, ये भी पॉसिबिलिटी रखो कि ये भी हो सकता है कि उसकी डेथ कोई फाउल प्ले नहीं है और वाकई हार्ट अटैक से डेथ हुई हो। हम Right. यहाँ पर भी, मैंने बहुत सारे 2 केसेस अभी रिसेंटली देखे हैं लास्ट ईयर, और उससे पहले भी मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे थे। और लाइक वरुण सेड, यू नो, वो शेरनी है वो लड़की, जैसे सिद्धार्थ के बारे में कहते हैं ना कि वो शेर है, वो लायन, और एक शेर एक ही होता है, और उसके जैसा ना कोई था और ना होगा शायद। तो वो भी शेरनी है, वो छोड़ेगी नहीं किसी को। लेट हर जस्ट यू नो कम आउट ऑफ दिस ग्रीफ, दिस पेन। अगर हम लोगों को इतना फील हो सकता है, मुझे पता है कि मैंने 2 दिन कैसे कटे हैं। कल तो मेरी हालत बहुत खराब थी, इट रियली अफेक्टेड मी अ लॉट, आई डोंट नो व्हाई। मैं उसको पर्सनली नहीं जानती थी, एंड जैसे आप में से कितने लोगों को इफेक्ट किया, वरुण को किया, आई नो इट। तो उस बेचारे की क्या हालत होगी। वी हैव सीन दोस फोटोग्राफ्स, वी हैव सीन एवरीथिंग। तो बी रेस्ट अश्योर्ड, फैमिली पे थोड़ा भरोसा करो, थोड़ा सा भरोसा शहनाज पे करो, एंड यू नो डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ दिस होल थिंग। जहाँ तक बॉडी कवर करने की बात है, ये टॉपिक भी आप बात कर रहे थे वरुण, कुछ लोग अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो नहीं चाहती हैं। तो ये लाइक आई सेड, इस पूरे केस में मोस्ट ऑफ द डिसीजंस हैव बीन टेकन बाय द फैमिली देमसेल्व्स, कोई और नहीं उनको डायरेक्ट कर रहा था। और देवानंद ने भी यही कहा था अपनी फैमिली से कि जब मैं जाऊंगा
तो मेरा चेहरा किसी को मत दिखाना। आई डोंट वांट Right. देम टू सी माय फेस, प्लीज़ कवर इट। एंड वरुण इज़ एब्सोल्युटली राइट, कभी-कभी डिस्कलरेशन हो जाती है। वो मेमोरी शायद लोगों के मन में नहीं छोड़ना चाहती थी उसकी मदर, क्योंकि यंग लड़का था, हैंडसम लड़का था, तो मे बी इस वजह से नहीं शक्ल दिखाई होगी। और जिस तरह से ही राइटली सेड कि कितना तमाशा बना है और कितना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है फ़ोटोग्राफ्स का पिछले केस में, हो सकता है उस वजह से वो नहीं चाहते कंट्रोवर्सी, वो दे वांट टू डिस्क्लोज मैटर, सो लेट्स रिस्पेक्ट दैट। इसलिए Yeah. उन्होंने किसी को मीडिया को कोई इंटरव्यूज़ नहीं दिए, अंदर मीडिया को आने भी नहीं दिया, चाहे वो क्रिमेशन की बात थी या जब बॉडी थी यहाँ पर उनके घर पर भी, they didn't allow anybody, maybe we should respect that। और ये जो बांधने वाली बात है, ये मैंने ये सुना है, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि जब बॉडी चलती है तो कभी-कभी यू नो द पीसेस फ्लाई आउट आल्सो, वो लकड़ी जब जलती है साथ में, इसलिए ऊपर लकड़ी रखी जाती है, दबाई जाती है। सॉरी आई एम सेइंग ऑल दीज़ थिंग्स, बट दिस इज़ हाउ आई हैव हर्ड इट इज़। सो इसीलिए यू हैव टू टाई इट। um, Yeah. this is what I have heard, so this could be a logic, but anyway, Right. I just we just wish कि उसकी आत्मा को शांति मिले। We wish and we should wish and pray कि फैमिली को स्ट्रेंथ मिले, शहनाज को स्ट्रेंथ मिले। करेक्ट, करेक्ट, नो एब्सोल्युटली। और दो चीज़ें मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा, फातिमा जी एंड रूबल, so sorry for your losses, and you know, I'm so you know, I feel humbled कि हमारे साथ आप लोग ऐसी यू नो चीज़ें शेयर कर रहे हैं इस चैट में या इस प्लेटफॉर्म पे। May God bless you, your family, and you know your family members who you've lost. You know, may God give them peace for sure. So thank you so much for you know sharing this with us. You know, Fatima ji, जैसे आप कह रही थी, and I'm gonna maybe try to flash that message एक बार और लोगों के लिए. Uh, it is very very heartening to read this. My dad died recently and was kept in the morgue too, only released to the funeral home and readied for his burial. So you know, आई थिंक ये भी एक थ्योरी है जो बहुत लोग सुनाते हैं, चलाते हैं कि बॉडी फैमिली को क्यों नहीं दी गई, फैमिली घर पे क्यों नहीं लेके गई। यू नो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स आजकल, आई थिंक, एंड दैट्स व्हाट इवन शी वाज सेइंग, फातिमा जी वाज एक्सप्लेनिंग कि उनके साथ पर्सनल जो हुआ है कि बॉडी को रेडी किया गया था फॉर बरियल एंड डायरेक्टली फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द बरियल साइट। तो शायद ऐसा ही मैंने सुना था, बट यू नो हियर इज समवन हु इज एक्सप्लेनिंग इट। सेम चीज हमारे साथ रूबल जी ने शेयर की कि जब उनकी यू नो मदर के साथ हुआ था, शी वाज केप्ट in the cold, and was not handed over to the family till the time he was not there locally. So halaki these are very sad things to even talk about, but you know, I'm the only reason I wanted to highlight and talk about it because these guys shared it was to stop any kind of fake narratives के फैमिली घर पे क्यों नहीं लेके गई बॉडी, क्यों उनको ऐसे बांध के रखा गया, क्यों उनको यू नो मॉर्ग में वरुण रखा गया ओवरनाइट एंड ऑल दैट स्टफ। वरुण एक चीज, कोविड भी तो है ना, मे बी देयर आर सर्टेन कोविड प्रोटोकॉल्स आल्सो। यप, आई नो, वो भी हो सकता है। यू नो, और मैं देख रहा हूँ चैट में हमारे साथ अब कुछ शहनाज के यू नो फॉलोअर्स एंड फैंस भी हैं। सो Sidnazian, I think that's how they are called. So Sonia ji, thank you for coming and sharing the kind of emotions with us as well. As much as we are, you know, very strong SSR warriors, we really call ourselves and take pride in that. But at the same time, we are here to support not only Siddharth but also, you know, Shehnaz. Uh, and I really want you to please, you know, take this message from all the on behalf of all the SSR warriors as well, that you know we are here, we're going to stand very strong for her and for everything that's happening around this, and we will not let uh, any kind of fake narrative. We will try to, you know, quash them, but we need all your you know support as well, and they wanted to do it before sunset. Okay, so Yash is also
Wanakam Yash was because they wanted to do it before the sunset. Straight. Uh, correct. So that is the reason as well. I'm sure he has done his research as well, and that's why he's sharing it. So thank you, Yash, for sharing it. So basically, that's why they did not take the body to home, because they wanted to do it before the sunset. So again, like I said, Siddharth was, that's what it means. Siddharth was taken straight. So thank you for sharing that as well. And एक बार मैं फिर से repeat करूंगा, because I have said it multiple times on various platforms, चाहे वो spaces में जाके, चाहे अपने life में कह रहा हूँ, चाहे मैं social media पे कहूंगा. Please, at this point of time, give all the respect to the family. Do not start these fake narratives. Do not help anyone start any fake narratives. Let the family come out and speak. ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस टाइम पे फैमिली को सपोर्ट करें. Want to see the last photo, Rita ji? That's the thing, right? I completely understand your emotion. लास्ट फोटो आप उसकी खुश खुश की देखें, राइट? मैं आपको उसकी लास्ट फोटो दिखाता हूँ, जो एयरपोर्ट पे खींची गई थी विद द मदर, आई थिंक. लेट मी शो यू. ओके, दिस इज द लास्ट पिक्चर. जो राखी पे मदर के साथ तो थी, वो तो एयरपोर्ट पे है. लेट मी सी इफ आई कैन. ओके, if you want to remember him for the rest of your life, I think this is such a pretty photo, even though there's a child, guys, but this is a public photo, so I'm gonna okay, let me see if you guys can see this. Please remember your Sidharth, the Sidharth we all know, this way. Always smiling, happy. Raksha Bandhan ki picture hai. And this is how I would love all of you to please remember. Don't wait. Don't expect to see, a different tarah ki photograph. If you want to remember him, always remember he always had this smile on his face. Always. गुस्से में भी उसके बाद जब स्माइल करता था, तब भी वो ऐसे ही सबको करता था. So please, guys, that's my humble request. This is for you, the last photograph. अगर आप अच्छी photograph में याद रखें. And really, humble request. कोई कुछ भी कहे, please don't start this nonsense on somebody's death. Please, that's my humble request. All right, before I end this, anything else, Shalini, you want to say? Yeah, bhai, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कि वो हीरो था और मेरी नज़र में वो हमेशा हीरो ही रहेगा. एंड आई होप कि हम सब उसको, लाइक वरुण सेड, एक स्माइलिंग फेस उसका याद रखें और हम भी उसको हमेशा याद करके खुश ही हों, ब्लेसिंग्स ही दें उसको. Exactly. और मुझे यही चीज कहनी है कि अगर शहनाज के बाद अगर किसी को मैं बोलूंगा कि भाई मोर पावर टू यू, तो वो है आशिम रियाज. आशिम रियाज वहां पर मतलब उसके छोटे भाई जैसा था आशिम रियाज. वो भले ही बिग बॉस हाउस में मैंने सुना था वो लोग लड़ते थे, पर जब कल मैंने उसकी आशिम रियाज की हालत देखी तो मुझसे भी रहा नहीं गया, क्योंकि वहां पर वो अकेला बैठा हुआ था. जैसे सब तो पास खड़े थे, वो अकेला बैठा हुआ था. और जैसे कोई आदमी कहीं खो जाता है ना सोचते सोचते, वैसे ही वो बैठा हुआ था. तो यही चीजें बोलनी है मुझे आशिम रियाज से कि भाई मोर पावर टू यू. आपने भी फैमिली की कम मदद नहीं की है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मदद की. इन दोनों की दोस्ती भी बहुत चर्चित है. Yep. और एक जो कॉन्स्पिरेसी वाली जो बात है ना,
वो किसके द्वारा फैलाई जा रही है वो मैं आपको ट्विटर पर बताऊंगा, या आपकी अनुमति हो तो मैं यही बता दूं। बताएं बताएं, बिल्कुल बताएं। वो है दिल्ली वाले जो लॉयर है ना, उनके चमचों के द्वारा ये चीज फैलाई जा रही है कि भाई हम तो मान रहे हैं कि भाई ये एक नॉर्मल डेथ है, और वो लोग मान रहे हैं, वो लोग खुद को सीबीआई समझते हुए मान रहे हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी चीज को पकड़ लिया सलमान खान के फैंस ने, और उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस थे ना, वो स्पेस कर रहे थे, उनको भड़काया हमारे खिलाफ कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सिद्धार्थ शुक्ला के लिए न जाने क्या क्या चीजें बोल रहे हैं कि भाई उनके लिए सीबीआई आनी चाहिए, मर्डर है, ये चीज है, ये चीज है। उस इस चक्कर में उनके बकवास के चक्कर में हम सब पर ही हम सबको घेरने की कोशिश की उन्होंने कि भाई मैंने भी उस टाइम में बोलने की कोशिश की थी कि भाई पर मुझे मौका मिला नहीं बोलने का, वरना मैं बोलता वहां पर। इसलिए मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी ना फैलाए। तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी के चक्कर में ये दूसरे फैंडम वाले हम सबको उनको नजर में विलन बना देते हैं कि भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो किसी भी, जब तक फैमिली ने खुद बोला है कि भाई हमें कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रहा है, या कहीं कुछ होगा, किसी को कुछ लगेगा तो हम इंक्वायरी करेंगे, तब तक तो तुम शांत बैठो ना। तब तक तुम दिमाग क्यों चलाते हो? या यही चीज मेरे को बोलनी थी। नहीं, थैंक यू, आपने ये क्लैरिफाई भी किया। और इस दिल्ली के ठग के बारे में तो ऑब्वियसली विल टॉक लेटर। इस इतने स्पेशल क्या बोलूं मैं, इस इंसान के लिए, आई थिंक इवन इवन टॉकिंग अबाउट दिस यूजलेस इडियट ऑन फॉर सिद्धार्थ इज लाइक डिसरिस्पेक्टिंग सिद्धार्थ शुक्ला। सो अभी तो इसके लिए हम बात नहीं करते, बट येस, टू ऑल द Sid Nas fans and all the supporters, as SSR warriors, we are here. We are gonna start supporting anything that is said against, either Siddharth or Shehnaz. We are here to quash it. We are here to, stop them from doing that. And hopefully we all can. एग्जैक्टली, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज आएंगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे उनको अपना धंधा चलाना है। सो ऐसे लोगों के लिए मेरा तो सिर्फ इतना ही है कि अभी के लिए तो हम उनको इग्नोर करेंगे इस टॉपिक पे भी, बट एट द सेम टाइम आई रियली वांट a lot of support for Shehnaz Gill. She deserves it. She is a Sherni. Trust me, if at all there is any conspiracy or anything, she will be the first one to rip apart the entire cabal. कोई भी हो वो नहीं देखेगी. So please give her all the respect, give her all the support. That's all I want to say. On that note, I'm going to end this session. We'll see you guys soon again. But at the same time, please keep praying for Sushant's family. Please keep praying for Siddharth's family as well now. We lost two amazing, and we've lost many, but two very similarly talented, good looking, and very, very caring people. And that's why we are here to support this cause. So thank you so much. Take care. Why is that YouTubers are fighting among themselves and shaming? पता नहीं जी, यूट्यूबर तो जो फाइट कर रहे हैं आप उनसे बात करें, हम तो यहाँ पर फेक नैरेटिव वालों से फाइट करते हैं, और वो हम करेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. भगवान सुशांत को न्याय दे और सिद्धार्थ को अपने चरण कमलों में स्थान दे। लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ मैं, वे सुशांत को न्याय दे, सुशांत, दिशा, जिया, इनको न्याय दे, और सिद्धार्थ को अपने चरण कमलों में स्थान दे. बिल्कुल. Thank you everyone. Thank you. Take care, and stay positive, guys, and keep roaring for Sushant, for sure. We'll continue back to basics very soon. हम और भी बातें करेंगे. Last session बीच में ही रह गया था, बीच में क्या शुरू ही होने लगा था, but we got to know about Siddharth. But we will talk about Sandeep Singh very soon again, with some more details, and other topics as well. जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं. So let's fight for the cause. Let's fight for justice for Sushant Singh Rajput. Take care. Good night. Bye-bye.